where there is elastic collision, inelastic collision, coefficient of restitution. These three words we have to remember: elastic, inelastic, and coefficient of restitution. Isha, what is elastic collision? What is meaning of elastic collision? Yes, sir. What do you mean by elastic collision? In which momentum and kinetic energy both are conserved. Kinetic energy and momentum both are conserved. Correct. Can I say relative velocity of approach is same as relative velocity of separation in case of elastic collision? Yes, sir. Yes, sir. That means u1 minus u2 is v2 minus v1. What is formula for final velocity v1? U1 M1 U1 minus in M2 bracket M1 minus M2 upon M1 plus M2 plus 2 M2 V2 upon Very M1 good. plus M2. So nice. Very good. And if it is v2, then it will become here u2 U2 M2 minus m2 M1 minus m1, and plus second term will be 2 M1 times U1. m1 u1 upon m1 plus m2. Please write it again. Only the formula part. Completed? Done, sir. Can I clear? Everybody Yes. is done? Okay. Yes. Sixth. If masses of two bodies are same in case of elastic collision, what happens? Energies are Velocities are velocities are exchanged. exchanged. Velocities are exchanged. That means v1 will become u2 and v2 will become u1. This is meaning of exchange. Am I correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. For in elastic collision, momentum is conserved, but kinetic energy gets changed. Means initial kinetic energy is greater than final kinetic energy. There is loss in kinetic energy. Write this 2 point again.
Yes, completed again. 2 points. Yes, sir. Yes, sir. Initial kinetic energy minus final kinetic energy equals to half of, what is the formula? Difference in kinetic energy. mv square minus u. Pardon? No, initial kinetic energy minus final kinetic energy in case of elastic collision, inelastic collision. Not remembering? M1, M2, U1 minus U2 square upon twice of M1 plus M2. Correct? Na? Product upon sum, then U1 minus U2 square upon 2. याद नहीं है? Hello? Yes, sir. sir. Yes, sir. Right, this formula. M1, M2 into U1 minus U2 square upon twice of M1 plus M2. Then coefficient of restitution equals to relative velocity of separation upon relative velocity of approach. Therefore, E equals to V2 minus V1 upon U1 minus U2. 10 point. For perfectly elastic collision, E equals to 1. And for perfectly inelastic, 0. E equal to 0. Okay, done now? Yes, sir. Then write, if a body is dropped from, if a body is dropped from height h and rebounds to height small h, then E equals to square root of small h upon capital H. Completed, and now I'm starting with MCQ. One extra MCQ right now. Question I'm dictating. A rubber ball a
rubber ball is dropped from a height of 5 meters on a planet where acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of 16 by 25, 2 by 5, 3 by 5, 9 by 25. A ball is dropped from height 5 on a planet where acceleration due to gravity is not known. On bouncing, it rises to 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by factor of how much? Sir, option C. Option C is correct. What formula you have used? The E is used to root of h by Yes, y. E equals to root of small h by capital H. So 1.8 upon 5. After bouncing, it loses by what factor? Is nothing but E only. After bouncing, it is separating. So small h upon capital H, 1.8 upon 5. So we can say 18 upon 15 root. 2 into 9, 2 into 25, 3 by 5 is correct option. It loses its velocity on bouncing by what factor? So separation is lost and approach is actual. And E is same. Can I clear now this one? Yes, sir. One more sum of E type only, extra that we are doing. A particle falls from a height h. Difficult है थोड़ा सा. A particle falls from height h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If E is the coefficient of restitution, then the total distance traveled
after rebounding has stopped is h into 1 plus e square upon 1 minus e square, h into 1 minus e square 1 plus e square, h by 2 1 minus e square 1 plus e square, h by 2 1 plus e square upon 1 minus e square. Write question properly. This is slightly difficult, sir. Once you have understood the concept, then you can memorize the solution of this one. A particle is falling from height h upon fixed horizontal plane and rebounds. E is coefficient of restitution. Then the total distance traveled after rebounding has stopped is how much? Written everything, then I will rub this. Yes, you have written for? Yes, sir. A body is dropped from height h. So for me, capital H is small h given, correct? This height is h. In our formula, we write capital H. They have given that capital H is small h. So it falls from this height small h and rebounds, suppose, to height h1. That means h is h1 I have taken. So can I say E is root of h upon h1? Hello? Yes, sir. E can I take root of h upon h1 by that formula? So correct. E square is So h it should upon be h1 upon h, H1 no? upon H. yes, h1 upon h. h1 upon. So what is h1? E square into h. बराबर? Yes, sir. अब ये इधर से रिबाउंड हुआ, मतलब क्या किया, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा, इधर से ऊपर गया इधर से नीचे आया, पहला डिस्टेंस कितना कवर किया h, फिर इधर से नीचे आएगा और फिर रिबाउंड होगा ना, कोई तो दूसरा हाइट पे टिल द Yes, रिबाउंडिंग sir. स्टॉप्स बोला है. Yes, yes, yes. तो h1 गया फिर h1 आया, तो टोटल इधर से जाके आने पे डबल h1 डिस्टेंस कवर किया ना. हाँ सर. ये एक सेट हो गया ना इसका. टोटल अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, ये h2 ऊपर गया सपोज, तो h1 से गिर के h2 ऊपर गया, तो h2 क्या होएगा, e स्क्वायर h1 और नॉट, मतलब अभी इधर वाला हाइट उसके लिए है, नहीं समझा? वापस दे. Till the rebounding stop they are telling. So first इधर से जंप मारा, इधर आया, फिर रिबाउंड हुआ, इधर तक पहुंचा, फिर नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाके नीचे एक सेट मारता है ना सेम हाइट वाला, फिर इधर से रिबाउंड होएगा कुछ तो हाइट का, और फिर नीचे आएगा सेम हाइट का, दूसरा सेट हो गया, फिर ऊपर जाएगा कुछ तो कम हाइट का, और फिर नीचे आएगा सेम हाइट तक, तीसरा सेट हो गया, फिर इधर से कुछ हाइट तक जाएगा और फिर नीचे आएगा सेम हाइट तक, नेक्स्ट सेट, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा till it stops. Not followed? Okay, followed. Followed, sir. That means if this is, I take original height h, इसको ऐसा नाम दिया h1, ये h2, ये h3, ऐसा डॉट 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 होते रहेगा. They want Yes, sir. total distance covered. तो फर्स्ट वाला डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस आई एम राइटिंग h,
it is H covered plus ये 2H1 हो गया ना, आएगा ये ऊपर गया फिर नीचे आया सेम हाइट, फिर टकराने के बाद थोड़ा कम गया तो 2H1 हुआ ना। Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्या होएगा फिर? 2s2. हाँ बराबर, एक बार ये सीक्वेंस समझ गया तो हो गया खत्म। कुछ डाउट है किसी को इधर तक? No, sir. इधर से नीचे आया H हाइट, ऊपर गया H1, फिर नीचे आया H1, फिर ऊपर गया तो थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ if it is E, it is root of H1 upon H, मतलब E square will be H1 by H, therefore H1 is E square H. Clear? हेलो, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये फर्स्ट सेट हो गया ना। अभी सेकंड सेट के लिए ओरिजिनल किधर से गिरा वो? H से गिरा ना नीचे, और फिर रिबाउंड हुआ ना H2। हाँ sir. So for second set, same E, coefficient will remain same because nature of material and surface is same. But ये H1 will become H2 and उसका ओरिजिनल हाइट H1 लेना पड़ेगा। ये बात भी समझा? देखो फर्स्ट सेट में इधर से गिर के H1 गया ऊपर, सेकेंड सेट में H1 से नीचे आया और H2 से ऊपर गया, बराबर ना? Yes, sir. देखो नहीं समझा तो प्लीज आस्क कर। इधर से आया H, रिबाउंड हो गया H1, लेकिन फिर से नीचे आया H1, उसके बाद जब ये रिबाउंड हुआ तो उसके लिए हाइट ये था ना ओरिजिनल हाइट, और इधर से रिबाउंड हुआ ना। हाँ H2. sir, हाँ समझा. पक्का? Yes sir. आयशा, Yes, sir. हाँ सर. E square is H1 upon H2. So H2 becomes E square H1. Therefore H2 will become E square H1, मतलब फिर से E square into H. अब ये E square मतलब E raised to 4 क्या नहीं? Yes sir. E raised to 4 H1. नेक्स्ट वाला क्या आएगा फिर? दो मिल गया हम लोग को, E square E raised to 4. नेक्स्ट वाला E raised to 3, 3 बार आएगा 6, फिर 8, ऐसा बढ़ते जाएगा ना। हेलो, हाँ Yes, सर. sir. Yes sir. Yes sir. just copy this much. Only 2 term is sufficient, then it is sequence going as it is. अभी इसलिए मैं बोला आपको, अगर समझ गया तो बाद में ये एक ही चीज है, ऐसा सॉल्यूशन याद कर लेना, so that 1 minute में you can do. But if you have understood तो सॉल्यूशन याद करने में मजा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड दे वांट टिल इट स्टॉप्स, तो पहला H कवर किया, बाद में H1 गया, H1 आया 2H1, फिर H2 गया, H2 आया 2H2, H3 गया, H3 आया 2H3, H4, बाद में धीरे धीरे कम हो। वो शीट में इंक्लूडेड नहीं था इसलिए मैंने पहले स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज इंपॉर्टेंट सम इट शुड नॉट स्किप फ्रॉम माय माइंड। Done, sir. Preparation. Done, sir. E is to 4, H तक हो गया आपका question. I'm just clearing it. Therefore, total height is first height H, then 2H1, then 2H2, dot 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 dot. That is H plus 2 times E square H plus 2 times H2
is e raised to 4h plus dot dot dot. First term h, I'm taking common h from all. So I will get 1 plus 2 e square plus 2 e raised to 4 dot dot dot. This also followed. H common layer under 1, 2, 2 and so on. Clear this line? Yes, sir. This becomes h into 1 plus, I'm taking now 2e square common. So inside I will get 1 plus e raised to 2 plus e raised to 4 dot dot dot. अब ये मैथ्स वाला चीज है. GP. Yes, GP. हो गया क्या आपको GP? Yes, sir. This is GP. What is sum of n terms in GP? A1 minus R is to upon 1 minus. A into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. Correct? Hello? Yes, sir. H equals to h 1 plus 2e square. What is 1 here? A is how much? 1, no? First term. Yes, sir. And r is what? Common ratio? E square. E square upon 1. E square. ये कितना e square है ना? Hello? Sir, but that is till infinity, no? Till infinity, yes. So A upon 1 minus R ही आएगा, sir. मतलब हम लोग उसको neglect कर सकते हैं. बराबर बोला. Yes, sir. So this can be neglected. 0 हो जाएगा. और नीचे क्या आ जाएगा फिर 1 minus e raised to 2. बराबर? Yes, 1 minus. So if it is tending to infinity, then this power becomes, fraction becomes 0, so we get this much. Now h equals, देखो ये e ना less than 1 है, ये e exponential वाला नहीं है 2.713, तो less than 1 means 1.2 1/3 ऐसा कुछ तो रहेगा. इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कम होते जाता है वैल्यू. Now you told h gp मालूम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो फॉर्मूला. If the fraction is less than 1, एक एग्जांपल लेता हूं, हाफ लेस देन 1 है, उसको स्क्वायर करो, क्या आएगा? 1/4. Yes, sir. 1/4 हाफ से कम है ना? हाँ, sir. फिर उसका क्यूब किया तो 1/8, बाद में 1/16, ऐसा कम होते जाएगा ना, इंफिनिटी पे वो नियरली 0 है. What Avan said is correct. If r is fraction less than 1, then if power is tending to infinity, its value will tend to 0. So I get h into 1 plus 2e square into 1 upon 1 minus e square. Follow till this? Yes, sir. So h into 1 minus e square plus 2e square upon 1 minus e square. That means h equals to h 1 plus e square upon 1 minus e square. Do we have this option? ये वाला option दिया था मैंने? Option A. A. So I have by hearted this now. In exam, I will not waste my energy. So if the body falls from height h and does n number of rebounding till it comes to rest, so total distance covered will be h into 1 plus e square upon 1 minus e square. आज घर पे 5-6 बार लिख के बाहर मार देना है. तो ऐसा कुछ अचानक आ गया ना गूगली, तो don't waste your time, write direct answer. Copy full solution. Everybody has followed. Shitesh, you have followed? Shitesh, Yes, sir. Rajvardhan, Swaraj, Mohit, everybody has Yes, sir. followed? ठीक है. Yes, sir. Do it.
Done, sir. Now from our PDF which I have sent, come to page number 6, sum number 48. Page number 6, sum number 48. Come to page number 6, sum number 48. I'm reading that sum. Shall I remove this from the screen? Yes, sir. Two balls having velocity 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collides elastically in one dimension. The velocity of B and A after collision respectively will be how much? 48 sum. Two identical balls. What is meaning of identical balls? Same as. Masses are Same. Same masses. Same mass. Same mass. One is moving with 0.5, other is moving with 0.3 meter per second, same mass. Collides elastically. Collision is elastic. What you know? Exchange of velocity. Yes, sir. So what Yes, will sir. be V1 Yes. minus 0.3 na? Yes, sir. And what will be U1? Sorry, V2 0.5. 0.5. And 5. तो ऐसा है ऑप्शन अपने पास V1 minus 0.3 and V2 0.5. है चेक करो जरा है Yes, sir. Third is Yes, sir. कौन सा वाला है C. Option. C. C करेक्ट देखो दो चीज अदला बदली होएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो एक स्टेप हम लोग ने रॉन्ग लिख दिया है एक ही स्टेप है ये बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज दे हैव एक्सचेंज डायरेक्शन भी तो उल्टा होएगा Means. चलेगा राइट है राइट बिकॉज फर्स्ट वाले का डायरेक्शन जिसका पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव हो गया बराबर लिखा है इसका डायरेक्शन भी उल्टा हो गया उसका Sir, it will be B, right? Sir, it is B in the answer key. Yes, sir. They have asked for B and A respectively. फर्स्ट भी पूछा है क्या हाँ तो उल्टा लिख दो ना सी ए एंड बी दिया है और बी और ए का पूछा है तो बी 0.5 हो जाएगा ए minus 0.3 आंसर इज राइट बट दैट वर्डिंग दे हैव आस्क्ड डिफरेंट सो बी इज करेक्ट सी आवर आंसर इज नॉट रॉन्ग आर यू गेटिंग मी Yes, पर वो लोग sir. ने पहला बी का पूछा है तो बी का पहला लिखना है ए का बाद में लिखना है therefore writing wise it is B option
1 just wait. I'm just searching same type of sample comes. We will be doing that first. (208) page number 28, 208. A ball is allowed to fall from height of 10 if there is 40% loss of energy due to impact. Mark it, very important. So you said some number? 208. Sir, you are reading 209. 209. No, I mean my same I have transferred the question is like this. 208 in my booklet. It is given a ball is allowed to fall. Yes, sir. It's in ours. It is 209. चलो क्वेश्चन लिख लो बड़ा ये क्वेश्चन है. A ball is allowed to fall from a height of 10 meter if there is 40% loss of energy due to impact. Then after one impact, ball will go up to how much? In your book it is 209. Yes, sir. What is previous one in your book? Sir, if momentum is increased by 50%, then what is kinetic? Correct. मेरे book में वही है 207 number दिया है. What is 200? The time in which a force of 2 Newton produces a change momentum. नहीं फिर कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ है. ठीक है. Order is perfect in my book also. I will just cross check with the number and tell you. So I am doing 208 as per your book 209 if you are telling correct, no problem. Then I will cross check. Now you question to you are following na? Yes, sir. So you write as per your book 209. Don't avoid confusion. A ball is allowed to fall from height of 10 meter. Total question देख लेता हूँ कितना है आपको. अच्छा चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. 40% is lost. So what is available? 60. Correct. So therefore available is 60. मतलब 60% से वो rebound back होएगा ना? Yes, sir. तो उसका मतलब E is 0.6. ये meaning है. 40% lost, rebounds back with 60. So coefficient of restitution is 0.6. What is E का formula? Small h upon capital Small H. h upon capital H. Okay. E is 0.6. Small h I think we want. Capital H is given 10. E square में आएगा because velocity का square करेंगे तो square हो जाएगा.
E square equals to root of h by h. So E square is h by h. Therefore, it is 0.6 equals to h by h. So h equals to 0.6 into 10 equals to 6. Hello? Hello? Yes, sir. See, when you get B square, so this will become actually E square, h by h, because B square is 2gh होता है. काइनेटिक एनर्जी तो स्क्वायर में आता है ना, हाँ सर. तो ये स्क्वायर में लिख लेना. So whenever energy is given, then it is in final energy upon initial energy वो E square. This is the shortcut, otherwise it will take time. First you will find V, then you will find H, then you will find rebound wala V, then you will find H. So you shortcut. Done, sir. Sir, wait, sir. Sir, I got disconnected. Right. After this, I'm doing 214. Just check in your book, it is 215 or what? A moving mass of 8 kg. Yes, sir. That Yes, I'm doing. sir. Now can I clear this? Sir, just a second. Yes, sir, done, sir. See, V square is H, इसलिए जब ये E रूट में है तो E square काइनेटिक एनर्जी हो जाता है 215 as per your book. Mass of 8 kg collides elastically with mass of 2 kg. If E is the initial kinetic energy of moving mass, kinetic energy left after collision. A moving mass of 8 kg collides elastically, then what is kinetic energy left? Initially it is at rest, so it is 0. No? Hello?
A moving mass of 8 kg collides elastically with stationary mass of 2 kg. If E is initial kinetic energy, then what is the final kinetic energy? Question is same written in your book. Hello? Hello? Yes, sir. sir. Yes, sir. Initial kinetic energy is E, final kinetic energy we want. Can you tell me what will happen to this body because it is colliding elastically? Are you able to hear? इसका velocity दिया नहीं है, आप मान लो u1 ना, क्या फर्क पड़ेगा? And this is at rest. They collide elastically. डबल के स्पीड से आएगा वो. नहीं, exchange होगा. एक्सचेंज होगा ना. Velocity exchange हो जाएगा. मतलब इसको velocity कितना मिलेगा m2 को after collision? u1 मिलेगा. After collision, velocity of m2 will be u2. Okay? Will be u1. Hello? Yes, sir. Sir, So but is- masses are not same now. Yes, masses are not same. Correct. Masses are not same. So we can't say exchange होएगा. बराबर. Yes, sir. Perfect. तो V2 का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा? मैंने बताया आपको U1 into U2. U2 into क्या? M2 M2 minus M1 upon M1 plus M1 plus M2 plus plus 2M1 M1 U1 and U1. M1 plus M2. 2M1 U1 upon M1 plus M2. So from this I can get V2. Okay, just copy this much. Very good. It is not same mass, so exchange is not possible. Since mass is not same, therefore no exchange. So ये final velocity का formula याद है. V2 will become 2 times M1. M1 is 8, U1 we are not knowing. M1 plus M2 will become 8 plus 2. That is V2 equals to 2 times 16 U1 upon 10. So V2 equals to 1.6 times U1. Completed? Sir, Huh? sir, it will be 164.1. No, ये U1 है U1. U1 है. U1 कितना पता नहीं ना? 2 M1 8 U1
u1. 8 plus 2. 8 to the 16. u1 upon 10. 16 upon 10 is 1.6 u1. It is not 164. It is 16 u1. Okay, sorry, sir. I didn't see. Everybody has done till this. Yes, sir. Now, E means initial kinetic energy, which is half. E is the initial kinetic energy, which is half into m, 8 into u1 square. That will become 4 times u1 square equation. Kinetic energy left, suppose I write E dash is half into second body को भी मिलेगा kinetic energy. सेकेंड बॉडी का स्पीड कितना आया? करो। सेकेंड बॉडी का स्पीड कितना आया? 1.6 q1. 1. सेकेंड बॉडी का मास इज 2 और वो 1.6 टाइम्स u1 स्क्वायर है। That means it will become 2.56 u1 square. So if I take ratio, E dash upon E is 2.56 u1 square 4 times u1 square. That means E dash equals to 0.64 times E. 0.64 times E. This is the kinetic energy of second body. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Just copy till this. Done, sir. Now read the question louder. One of you read it. Who will read? Arya, you will read. Okay, sir. Read it. A moving mass of 8 kg collides elastically with a stationary mass of 2 kg. If E be the initial kinetic energy of the moving mass, the kinetic energy left with it after collision will be. Okay. Anay? Anay? Yes, sir. Yes. What is meaning of this word kinetic energy left with it? With it. Kinetic energy left with it. मतलब क्या? मतलब ऐसा है ना, a body जिसका मास 8 kg है उसका काइनेटिक एनर्जी E है। जब दूसरे बॉडी के साथ कोलाइड किया which was at rest, तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी बाद में बच गया, ये ना मीनिंग? Yes, sir. यस बगो पतन। Yes, sir. तो आपको E डैश नहीं चाहिए, आपको चाहिए इसके पास, जिसके पास E था एनर्जी, उसके पास कितना एनर्जी बच गया। Yes, sir. तो क्या आएगा आंसर? ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है, लेकिन जो आंसर पूछा है उसके लिए करेक्ट नहीं। E डैश तो इसका एनर्जी हो गया, तो इसने E में से इसको दे दिया ना 0.6 E। E minus E. Very good. So can I say left energy left with first body? Energy left with first body. देखो ट्रिकी था थोड़ा क्वेश्चन,
विल बी, उसका पहले का एनर्जी माइनस ई डैश जो दूसरे को दिया। नहीं समझा? हेलो 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 हेलो। Yes, sir. So E minus 0.64 E, that is 0.36 E. 0.36 E is the answer. 0.36 E. Aman, you have done full? Yes, sir. Can you suggest me any other method? One I did, second का एनर्जी निकाला, फिर फर्स्ट का एनर्जी में से सेकंड को जो दिया माइनस किया, उतना एनर्जी उसके पास रह गया। Yes, Nandini? Any other way out of this? Karan Goyal? Any other Yes, thought? Any other method? आपको सोचना है, रॉन्ग राइट तो ठीक है, आंसर तो मिल गया आपने को 0.36। और कोई मेथड था क्या? फर्स्ट बॉडी के पास एनर्जी ई है, बाद में बोला इसके पास कितना बच गया, तो मैं इसका वेलोसिटी निकालूं तो भी चलता था ना। तो इसके पास जो बच गया वो हाफ m1 v1 स्क्वायर होता ना। नहीं समझ में आया शायद? यस अमन? हाँ सर। They are telling what is energy left with the body which is colliding. तो उसके पास एनर्जी कितना था? E था ना पहला। Yes, sir. तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना एक और मेथड। इसके पास एनर्जी E है, when its velocity is u1, कोलाइड होएगा तो इसका वेलोसिटी v1, तो उसका जो एनर्जी आएगा E dash will be half m1 v1 square. Yes, sir. And then take ratio. Understood meaning क्या नहीं? हाँ sir. चलो मुझे v1 का फॉर्मूला बोलो, देखते हैं अभी क्या क्या। What is v1 का फॉर्मूला? U1 M1 minus m2 upon 2 times upon m1 plus m2 plus M2. ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये जीरो है। हाँ. तो q1 8 minus 2 upon 8 plus 2, that will become v1 6 u1 upon 10, तो v1 equals to 0.6 u1। अभी एनर्जी का फॉर्मूला E is half m1 u1 square, बच गया E dash is half m1 v1 square, रेशियो ले लो E1 upon E, half m1 m1 कैंसिल, 0.61 का स्क्वायर 0.36 डायरेक्ट आ जाएगा। चल समझ गया? सेकंड मेथड Yes, yes sir, yes sir. हाँ, तो बाय सॉल्विंग अलग अलग टेक्निक समझने हैं। एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस मीनिंग? नाउ ये प्रॉब्लम यू कैन ओनली सॉल्व इफ यू नो v1 v2 का फॉर्मूला आफ्टर डिवीजन, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व। कैन आई मूव अहेड नाउ? हेलो, Yes, sir. बराबर समझ में आया क्या? टफ सम किया है आज इसलिए। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। सम नंबर आपके बुक के हिसाब से 216। If coefficient of restitution is 0.5, then percentage loss of energy on each rebounding of the ball from height is. This is root of h by h. Okay. Hello? Hello? Yes, sir. So when I square it will become 0.25 h by h. ये रेशियो ऑफ हाइट मतलब रेशियो ऑफ परसेंटेज लॉस। 0.25 is the rebound back वाले का वेलोसिटी है। तो ये 25% वेलोसिटी मिला अपने को, तो लॉस कितने का हो गया? 75% का। 75 sir. आंसर इज डी।
आपको शॉर्टकट समझ गया ना क्या बता रहा हूँ? देखो ये v का फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh है। तो ये v स्क्वायर किया तो आपको h ही मिलने वाला ना इधर, और फिर से v किया तो h, बिकॉज एक बार इसका वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी खाली अप्रोच वाले का होएगा, फिर रिबाउंड हुआ तो फाइनल 0 है, तो जो वेलोसिटी से गया वो ही मिलेगा। तो h का मतलब v स्क्वायर, स्मॉल h का मतलब, एंड कैपिटल H का मतलब जिससे वो आया था उसका वो v स्क्वायर, बोथ आर रिलेटेड। तो ये है अपना रिबाउंड वाला वेलोसिटी का स्क्वायर, ये है टकराने वाले का। तो ये मिल गया अपने को। अवेलेबल उसके पास कितना है, 0.25। 0.25 मतलब 25% और नॉट व्हेन यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। Yes. मुझे लगता नहीं आपको समझ आएगा, शायद नहीं समझा ना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोच, कैन यू टेल? जो वेलोसिटी से इधर आया वही है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोच। हाँ सर। वो हाफ एम v स्क्वायर मतलब h है ना कैपिटल। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोच ही है ना अपना नीचे वाला डिनोमिनेटर। ये काइनेटिक सर। एनर्जी ऑफ सेपरेशन है। नहीं समझा? सर समझा अभी। 0.25 अगर उसके पास है ऑफ ओरिजिनल तो गया कितना, 25। 75। ये शॉर्टकट याद रखो। तो h अपॉन h का रेशियो इज इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। Yes, Vaishnavi, you followed or you want again explanation? Yes, Aryan Bagwe, Swaraj, Rajvardhan, Sandesh. Understood, sir. Yes, sir. पक्का समझा? झूठा मत बोलो, टाइम लगेगा चलेगा, मैं समझा दूंगा। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से बताओ। ये v स्क्वायर h है, वो बात समझ में आया? अरे just tell the truth. Have you followed? Everybody has followed? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 1 please keep on doing homework properly because I have to take lectures for clearing your doubts in that also. चलो नेक्स्ट सम करते हैं, एक क्लास समझ के लिए। The sphere, that's very good sum again. The sphere of mass m moving with velocity v hits another stationary sphere of same mass but at rest. If E is coefficient of restitution, then ratio of velocity of two spheres after collision, ratio of velocities of two spheres after collision will be how much? Ratio of velocities of two spheres after collision will be how much? Hello? Yes sir. One body of mass m is initially moving with velocity v, collides with another body of mass m which is at rest. Which type of collision they have not given. So please don't write direct formula v1 v2 wala. You will get wrong result. Can I use law of conservation of momentum? m1, what is law of conservation of momentum? m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2.
M1 is M into V, M2 is M, U2 is 0, M1, V1 I don't know, M2, V2 also I don't know. This is N, M. So M into V equals to M, V1 plus V2. So this gets cancelled. Therefore, V is V1 plus V2. What is formula for E? V2 minus V2 minus V1 V1 upon V1 minus upon V1 minus V2. U1 minus. So this will become E equals to V2 minus V1 upon U1. U1 is V, and this is 0. Okay. So, hello. Yes, sir. Yes, sir. You are getting tired or whatsoever. So V2 minus V1, these are the sums you have to tackle now. What is V? V is V1 plus V2. आपको क्या चाहिए? V1 upon V2 का रेशियो चाहिए ना? हाँ सर. हाँ, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा ना अपने को, क्या इतना टेंशन है? और हर सब थोड़ी केक वॉक रहेगा, सॉल्व डाला सब कुछ क्या आ गया. चलो लिखो फटाफट इतना. Complete till this. So beautiful sum. Now it is just cross multiply and take V1 upon V2. E times V1 plus E times V2 equals to V2 minus V1. Here there was chance of common mistake. You will take exchange offer. That is only possible if it is elastic. Nowhere it is given elastic. EV1 plus V1 is V2 minus EV2. So V1 into 1 plus E, this is V2 into 1 minus E. So V1 upon V2, 1 minus E upon 1 plus E is our required answer. All very beautiful sum we have done today. Please practice it at least 2 times. See, nothing is difficult if it is explained. Without explanation, yes, you may find sometimes difficult. Completed till end? Yes, sir. Okay. So that's all for today. Let us meet again on Friday. Again, collision का थोड़ा sum करना है अपने को. Shall I clear now this from the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Anybody who has not followed the sums, please practice.